अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू लर्न टू सर्व पाकिस्तान। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे PMS पाकिस्तान स्टडीज़ की सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स आई हैं वो सॉल्व आपके साथ शेयर की जाएंगी। 2005 से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बिकेम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ऑन तो ये 30 सितंबर 1947 है, उसको पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना था। कायदे आज़म वाज फॉलोड बाय, तो कायदे आज़म के बाद जो है वो गवर्नर जनरल जो बने थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं वो गवर्नर जनरल बने थे। डैश वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर ख़ारजा थे वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान थे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर एंड ढाका यूनिवर्सिटी वर द यूनिवर्सिटीज़ इनहेरिटेड बाय पाकिस्तान इन 1947। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के एरिया के अंदर थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय ओरिएंटल कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एज रीडर ऑफ अरेबिक, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ओरिएंटल कॉलेज है उसमें एज ए रीडर जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की थी। The first anniversary of Pakistan's independence was celebrated on, तो पाकिस्तान की जो आज़ादी की पहली एनिवर्सरी है वो 15 अगस्त 1948 को मनाई गई थी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से के मुताबिक। ड्यूरेंट लाइन डिवाइड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं, तो ये 1891 या 92 तब ये बनी थी। चोलिस्तान डेजर्ट इज़ इन डैश एंड आल्सो इन डैश प्रोविंस एंड इंडिया राजस्थान, तो चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो सिंध और पंजाब प्रोविंस के अंदर है और इंडियन राजस्थान के अंदर भी ये है। डैश सिविलाइजेशन इज़ एंशिएंट, तो जो पुरानी तहजीब है वो कौन सी है, तो इंडस वैली, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के वाले से पढ़ा जा रहा है तो इंडस वैली जो है। इस्लामाबाद इज़ पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, तो ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो पंजाब प्रोविंस के अंदर जियोग्राफिकली उसके अंडर आती है। डिवाइड एंड क्विट सेड बाय, तो ये जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था और 1942 के अंदर इन्होंने ये कहा था डिवाइड एंड क्विट के हिंदुस्तान को डिवाइड करो और छोड़ दो। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय सैयद अली अमीर इन 1891, तो सैयद अली अमीर जो हैं उन्होंने स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक जो है वो लिखी है। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1913 एंड लेफ्ट कांग्रेस इन 1920, तो 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, 1920 में कांग्रेस छोड़ दी थी। कराची रिमेन्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 14 अगस्त 1967, तो कराची जो है पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी था और ये 14 अगस्त 1967 तक था। फिर इसके बाद इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल बना दिया गया। पाकिस्तान प्रोफेसर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1979। आर्मी का मेजर, एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर और नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर जो है ये इक्वल रैंक्स होते हैं, तो इक्वल रैंक्स के क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। ये पाक नेवी की वेबसाइट के ऊपर दिए गए कंपैरेटिवली तीनों जो फोर्सेस हैं उनके। हिंदको इज़ द रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन पोठवार रीजन, तो पोठवार रीजन के अंदर ये हिंदको जो ज़बान है वो बोली जाती है। अंगीज़ क्वीन नूरजहां इज़ बरीड इन लाहौर, तो जो मकबरा जहांगीर है उसके अंदर ही नूरजहां का भी जो मकबरा है वो बनाया गया। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट सॉन्ग ऑन, तो 13 अगस्त 1954 को जो है पाकिस्तान का एंथम जो है वो पहली दफ़ा बजाया गया था, जो कि फीर जलंधरी ने लिखा था। डैश इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान एंड डैश इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो जैस्मिन जो है नेशनल फ्लावर है और मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है। डैश वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पाकिस्तान के जो पहले चीफ थे एयरफोर्स के वो एयर मार्शल असगर खान थे। पाकिस्तान ज्वाइंड एज मेंबर ऑफ आसियान ऑन 2 जुलाई 2004 एज 24th मेंबर, तो 2004 के अंदर 24वें मेंबर के तौर पर पाकिस्तान ने आसियान को ज्वाइन किया था।
Pakistan became member of World Trade Organization on 1st January 1995 and get general agreement on tariffs and trade on 30th July 1948. डैश इज स्काइंग रिजॉर्ट इन डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो मालम जब्बा जो है वो स्काइंग रिजॉर्ट है केपी प्रोविंस के अंदर। निशान हैदर इज़ द टॉप गैलेंट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री अवार्ड है, फौजी एजाज़ है सबसे बड़ा। कैम्बलपुर वाज रीनेम्ड एज अटक एंड लायलपुर वाज रीनेम्ड एज फैसलाबाद। तो अटक का जो पुराना नाम है वो कैम्बलपुर है और फैसलाबाद का जो पुराना नाम है वो लायलपुर है। लाल सोनरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बहावलपुर। PIA was the first airline to provide service of packing from outside the world. अब हम 2006 का जो fill in the blanks है वो आपके साथ शेयर करते हैं। The Indian National Congress was established in 1885 by A.O. Hume. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 एट ढाका एंड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सर आगा खान। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फर्स्ट एट बनारस इन द ईयर 1867। Sayyid Amir Ali laid the foundation of National Mohammedan Association in 1877. The province of Bengal was partitioned in 1905 and its annulment was declared in 1911. The Quaid-e-Azam became a member of Muslim League in 1913 and resigned from the membership of Congress in 1920. یہ کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ راجہ رادھا کانتھا لیڈ دا فاؤنڈیشن آف برٹش انڈین ایسوسیشن ان 1851۔ دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان واز قائد اعظم محمد علی جناح، while of India Lord Mountbatten became his counterpart. Military assets were to be divided between Pakistan and India with the ratio of 20% and 80%. Pakistan became a member of United Nations Organization in 1947 and it was 56th member of this organization. The chairman of Boundary Commission, Punjab and Bengal was Cyril Radcliffe and the award was declared on 17 August 1947. Liaquat Ali Khan presented the objective resolution in the Constituent Assembly which was passed on 12th March 1949. تو قرارداد مقاصد جو ہے وہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح inaugurated the State Bank of Pakistan on 1st July 1948 at Karachi. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 1 جولائی 1948 کو بنایا گیا تھا۔ اسلام واز ڈکلیئرڈ ایز دا اسٹیٹ ریلیجن انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو 1973 کے آئین کے تحت اسلام کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا تھا۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز فریمڈ ان 1956 which was abrogated by اسکندر مرزا۔ 2009 کا جو fill in the blanks ہے PMS کے وہ شیئر کرتے ہیں۔ The memorandum of similar deputation was drafted by Sayyid Hussain Bilgrami and the deputation met the Viceroy Lord Minto on 1st October 1906 at Shimla. The first regular session of All India Muslim League was held at Karachi under the presidency of Adamji Peer Bhai. جو آدم جی پیر بھائی تھے ان کی صدارت میں یہ کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ The credit for bringing about a rapprochement between the Muslim League and Congress یعنی کہ لکھنؤ پیکٹ goes to قائد اعظم while amongst the Hindu the name of Sarojini Naidu can be mentioned. تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ادھر سے سروجینی نائڈو۔ خلافت movement in India received a setback when Mahatma Gandhi suddenly decided to scrap the plan after the disturbances at Gorakhpur district, UP.
The Indian Muslims were forced to organize counter movements of Tabligh and Tanzim in response to the aggressive Hindu movements of Shuddhi and Sangathan. तो शुद्धि और संगठन के मुकाबले में तबलीग और तंजीम जो है ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई थी. One of the two Muslim members of the Congress committee which prepared Nehru report, Sayyid Ali Imam, could not attend due to his illness, while Shoaib Qureshi did not endorse the views of committee. Raja Radhakanta laid the foundation of British Indian Association in 1851. ये भी repeat हुआ है. During Urdu-Hindi controversy, George Campbell, Lieutenant Governor of Bengal and Bihar, and Anthony MacDonald, Lieutenant Governor of UP, supported Hindi against Urdu language. The Congress ministries resigned in 1939, and on the appeal of the Quaid-e-Azam, the day of deliverance was observed on 22nd December 1939. The Muslim members of Punjab Boundary Commission were तो सिरल रेडिकल फवाद के अंदर जो पंजाब बाउंड्री कमीशन के जो मुस्लिम मेंबर थे वो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे. 2012 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 known as Montego-Chelmsford reforms. Quaid-e-Azam resigned from the Indian National Congress in 1920 as a protest against non-cooperation movement. Quaid-e-Azam announced his 14 points on 28th March 1929 at Delhi. Gandhi-Irwin Pact was signed on 5th March 1931, under which Congress called off the civil disobedient movement. Under the Government of India Act 1935, the country was divided into 11 provinces, in which the largest population province was Bengal. Lahore Resolution 23rd March 1940 was seconded by Sir Abdullah Haroon from Sindh and by Qazi Muhammad Isa from Balochistan. The State Bank of Pakistan was established on 1st July 1948 and its first governor was Zahid Hussain. At partition, the total number of princely states in United India were 565 and the largest one was Kashmir, Jammu and Kashmir. K2 is the highest peak of Pakistan, located in the mountain range of Karakoram. The Indus Basin Treaty was signed on 19 September 1960 with the courtesy of World Bank. तो World Bank के अंडर जो है सिंतास मैदा 1960 में ये तय पाया था. अब हम 2014 के फिल इन द ब्लैंक्स जो शेयर करेंगे. ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 एंड इट्स फाउंडर वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम भी जिसको बोलते हैं. Shimla deputation consisted of 35 members and it was led by Sir Aga Khan. तो जो लॉर्ड मिंटो को जो मिला था वो 35 लोगों पर मुश्तमिल वफद था. The right of separate electorate for the Indian Muslim was first demanded by Shimla deputation 1905 and was first conceded by British India government in 1909. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League in 1913 at Lucknow. Quaid-e-Azam presented 14 points in 1929 at Delhi. ये भी काफ़ी टाइम्स रिपीट हुआ है. Pakistan Resolution 1940 was presented by A.K. Fazlul Haq and translated in Urdu by Maulana Zafar Ali.
Pakistan resolution was seconded from Sindh by Sir Abdullah Haroon and from Punjab by Maulana Zafar Ali. Pakistan joined United Nations on 30th September 1947 and its first permanent representative was Patras Bukhari. Pakistan national anthem was written by Fiz Jalandhari and composed by A.G. Chagla. Pakistan shares the longest border with Afghanistan and shortest border with China. अब हम 2015 के fill in the blanks करेंगे. Sindh Madrasatul Islam was established by Hassan Ali Effendi in the year 1885. Shimla deputation 1905 comprising 35 leaders met with Viceroy Lord Minto. All India Muslim League surrendered the separate electorate in 1927 under the Delhi proposals. तो जो दिल्ली तजावीज़ थी उनके ज़रिए 1927 में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको सरेंडर कर दिया गया था. Gandhi-Irwin Pact was signed in 1931 under which Congress decided to attend the Second Roundtable Conference. The British government announced communal award in 1932 under which Muslim demand of separate electorate was accepted. Government of India Act 1935 divided India into 11 provinces and the largest province by population was Bengal. Bande Mataram song was written by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Math. तो जो Anand Math novel है उसके अंदर Bande Mataram song है. Pakistan-Afghanistan border is called Durand Line and it was drawn in 1893. K2 peak is in the mountain range of Karakoram and its height is 28,251 feet. Pakistan recognized the People's Republic of China on 4th January 1950 and its first ambassador in China was Major General Nawabzada Agha Muhammad Raza. 2016 Pak Studies paper के fill in the blanks. Partition of Bengal took place in the year 1905 and it was proposed by Lord Curzon. 1905 के अंदर जो तकसीम बंगाल हुई थी वो लॉर्ड कुर्जन के दौर में हुई थी. The Muslim League won 30 out of 30 Muslim seats in the Central Assembly and 425 Muslim seats in the provincial assemblies in the election of 1945-46. At the time of creation of Pakistan, there was a cash balance of rupees 4 billion and Pakistan was to get rupees 750 millions among. The first Prime Minister of Pakistan was Liaquat Ali Khan and the first President was Sikandar Mirza. Zakat and Ushur Ordinance was promulgated on 20th June 1980 by General Ziaul Haq. Zob and Nari Bulan are the important dams of Balochistan province. Regional Cooperation Development was established in the year 1964 and it was renamed as ECO Economic Cooperation Organization. Under the 1973 Constitution, the first chairman of the Senate was Habibullah Khan
and Speaker of National Assembly was Sahibzada Farooq Ali. Pakistan's first women's university was established at Rawalpindi in the year 1998. It is named as Fatima Jinnah University. Pakistan's first public airline was Orient Airline and private airline was Hajweri Airline. तो ओरिएंट जो है वो पब्लिक और हजवेरी जो है वो प्राइवेट एयरलाइन थी। अब हम 2017 का जो पेपर है उसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। ये काफ़ी पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है, आप देख चुके हैं क्योंकि 2005 से हम पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। Quaid-e-Azam was declared as ambassador of Hindu-Muslim unity by Sarojini Naidu. The Cripps mission was sent to the subcontinent in 1942 under the leadership of Sir Stafford Cripps. The British government sold the state of Jammu and Kashmir to the Dogra Raja Gulab Singh for Rs 7.5 million only in 1846. Bharat declared to build a Bagaliar Dam on the Chenab River soon after the creation of Pakistan. Pakistan's first president was Sikandar Mirza and first vice president was Noor al-Amin. The National Assembly of Pakistan comprises 342 members and the Senate comprises 104 members. A British archaeologist, Sir John Marshall, supervised the excavation of the remains at Mohenjo-daro in 1922. Two Muslim members of Punjab Boundary Commission were Justice Dean Muhammad and Justice Muhammad Munir. K2 is also known as Goodwin Austen and its height is 28,251 feet. अब हम 2019 का जो PMS पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है उसके फिल इन द ब्लैंक्स शेयर करेंगे। Quaid-e-Azam resigned from the Indian National Congress in 1920 as a protest against non-cooperation movement. Maulana Muhammad Ali Johar started an Urdu daily newspaper Hamdard in 1913 from Delhi. Quaid-e-Azam inaugurated the State Bank of Pakistan on 1st July 1948 and its first governor was Zahid Hussain. Pakistan shares largest border with Afghanistan and shortest border with China. Pakistan joined Shanghai Cooperation Organization as full member on 9 June 2017 at a summit in Astana, Kazakhstan. The longest serving Chief Justice of Pakistan was Muhammad Halim, 3,205 days, and shortest serving was Muhammad Shahabuddin, 9 days. The first United Nations agency Pakistan joined as a member was Food and Agriculture Organization in the year 1947. The National Action Plan was launched by the government in 2014 to crack down on terrorism, having 20 points.
Pakistan takes first structural adjustment package from the International Monetary Fund during the regime of Ayub Khan in the year 1958. Takhte-Bai is an archaeological site of Buddhist civilization located near the city of Mardan in KPK. अब हम 2020 का जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है उसका फिल इन द ब्लैंक शेयर करते हैं. अंजुमन हमायत इस्लाम फाउंडेड इन द ईयर 1884 इन द सिटी ऑफ लाहौर. Muslim League demand of separate electorate was accepted in Minto Morley reforms in the year 1909. The year 1916 joint session of All India Muslim League and Indian National Congress were held at Lucknow. Post-Khilafat era had seen the launching of two Hindu movements, Shuddhi and Sanghatan. In the year 1932, Communal Award was passed, and in the year 1935, First India Act was enacted. Pakistan became member of the SEATO in the year 1954 and signed Baghdad Pact in the year 1955. First Governor General of Pakistan was Sikandar Mirza, and first President of Pakistan was also Sikandar Mirza. Hudud Ordinance was promulgated by Ziaul Haq regime in the year 1979. On 5th August 2019, the Government of India abolished Article 35A and Article 370 of the Constitution. On 24th March 2020, Prime Minister of Pakistan Imran Khan announced 900 billion worth of economic relief package in the wake of Corona pandemic. अब हम 2022 के अंदर जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर हुआ उसका फिल इन द ब्लैंक शेयर करते हैं. नदवातुल उलमा was founded in the year 1893 in the city Kanpur of India. Pakistan tested the nuclear device on 28 May 1998 in the district Chagi of Balochistan. Khunjarab Pass connects Pakistan with China, while Khyber Pass connects Pakistan with Afghanistan. Chaudhry Rahmat Ali was a graduate of Islamia College Lahore, which was established in 1886. Major Tufail Muhammad was cited with Nishan-e-Haidar for his undaunted valor in one of the skirmishes took place in India-East Pakistan border in the year 1958. NCOC was framed in April 2020 in order to combat COVID-19. Sindh Madrasatul Islam was founded in the year 1885 in the city of Karachi. The Shimla Agreement between Pakistan and India was signed in the year 1972, and at that time the Prime Minister of India was Indira Gandhi. Frazi movement was started by Haji Shariatullah in the province of Bengal.
The Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan on 19 September 1960 at Karachi. होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स 2005 से लेकर 2022 तक पेपर्स के अंदर आए हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं वो आपको आसानी से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।